अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे हामिद दबाशी द अरब स्प्रिंग द एंड ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म इस ऐसे को। दिस बुक द अरब स्प्रिंग द एंड ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज़ रिटन बाय हामिद दबाशी. This book talks about the Arab Spring, a series of protests or revolution that started in 2010. In Arab countries like Egypt, Libya and Syria, people were fight for freedom, so they came out on the streets to demand change. Hamid Dabashi is an Iranian-American professor and writer born in 1951. He is still alive and works as a teacher at a Columbia University in New York, United States of America. He teaches subjects like literature, culture and Middle Eastern politics. He is well known for writing about freedom, democracy and people's struggle in Muslim countries. He supports the idea that people should be free to choose their leaders and live with respect. This book was written after a big event called the Arab Spring. The Arab Spring started in 2010 in Tunisia when a poor man named Mohammed Bouazizi set himself on a fire because the police treated him very badly. पुलिस ने उसके साथ सही बिहेव नहीं किया था. उस गुस्से में आकर उसने अपने आप को जो है आग में डाल के हाथ में छलांग लगा के जला लिया था, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हुए. ठीक है. His death made many people angry. Protests started and quickly spread to other Arab countries. In these countries, people were suffering from the unemployment, poverty, lack of facilities काफ़ी ज़्यादा थी at that time. जब people started doing protest in every corner of the street, in every corner of their country or a road or everything. Corruption and no political freedom. Most of the government were ruled by dictators. Dictators होती है कि मतलब कि नस्ल दर नस्ल जो है वो चलती है. ठीक है. हुकूमत एट दैट टाइम डिक्टेटरशिप वहाँ पे चल रही थी. जब डिक्टेटरशिप होती है बंदा तो वैसे ही मर जाते हैं. जो आवाम होती है उनको फ़ायदा होती जाता है, नस्लों को फ़ायदा हो रहा है, बाकी सारे जलील हो रहे हैं. Who had been in power for many years. People wanted change. They want freedom, justice and democracy. These protests were called the Arab Spring because people felt like a new beginning was coming. Hamid Dabashi says that the Arab Spring was not just about politics or job, it was about something much deeper. It was about people wanted to live with dignity and respect. They were tired of being controlled by both old colonial powers and their own arguments. The title of book, The End of Colonialism, means colonialism is when countries like British or France ruled over Arab countries in the past. After those colonizers left, the Arab countries get independence, but many still ruled by local dictators. These leaders didn't give people real freedom. They acted just like the colonizer, controlling everything and working for their own benefits. पीपल स्टार्ट आस्किंग. अच्छा, एक मुल्क से जो पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें. हमारे मुल्क से ठीक है कॉलोनाइजर्स चले गए हैं, हमने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं हम कॉलोनाइजर्स का शिकार हैं. ठीक है. हम जो है ले लेते हैं, क्या लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं IMF से, डिफरेंट कंट्रीज. तो हम स्टिल जो है कॉलोनाइजर्स के अंडर ही हैं. यही बात हो रही है एट दैट टाइम अरब कंट्रीज़ में ऐसे ही हो रहा था. ठीक है. इंडिपेंडेंस उन्होंने ले ली थी, लेकिन फुली तौर पे वो इंडिपेंडेंट जो है इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे. कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी का शिकार थे. People start asking deep questions about their identity, their history and their futures. They were saying, we want to decide for ourselves who we are, how we live. They wanted to create their own future, not one made by Western powers or local dictators. Role of media in Arab Spring. One very important thing Dabashi explains is the role of media in these protests. In the past, government controlled newspapers and TV channels, but during the Arab Spring, people used social medias like Facebook, Twitter and YouTube to share real
स्टोरीज, ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट। अच्छा, मीडिया का क्या रोल था कि पहले तो चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन एट दैट टाइम जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो एक वीडियो बनाते थे, सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते थे और अराउंड द वर्ल्ड वो जो है फेमस हो जाती थी। यंग पीपल एंड एक्टिविस्ट recorded videos, posted messages and connected with others in different countries. This made it very hard for government to hide what was happening. तो गवर्नमेंट किसी को ये भी नहीं कह सकती थी कि नहीं लोग झूठ बोल रहे हैं। वीडियोस सबसे बड़ा सबूत है। द मीडिया बिकेम अ पावरफुल टूल। कहीं कहीं पे मीडिया जो है अच्छा किरदार भी साबित करता है, पॉजिटिव वे में भी चीज़ों को फैलाता है, कहीं कहीं नेगेटिविटी भी कहीं पे काफ़ी ज़्यादा फैला देता है। कहीं पे इतने ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि एक झूठ को सच और सच को झूठ में बदल दिया जाता है। पीपल वर नो लॉन्गर अफ्रेड बिकम दे हैड अ वे टू स्पीक आउट एंड बी heard. The Bashi shows that Arab world are strong, smart and ready to fight for their rights. The Bashi gives us a message of hope. He believes that Arab people are capable of changing their future. This book is very important to understanding how media, politics and history after colonialism all came together. So I'm done this video. Next video तक मुझे दीजिए इजाज़त. See you soon. Allah Hafiz.